Good evening to all. As we all know that this year Poshan month is celebrated in September 2022. I, Komal Chaudhary, Assistant Professor at Army Institute of Education, welcome you all for the 3 days webinar series on Rashtriya Poshan Maah 2022 from 27 to 29 September 2022, organized by AINSSL. Now I would like to call Neha and Raksha for anchoring. Neha and Raksha, over to you. A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. A very pleasant evening to everyone present here. I, Raksha Spal, with my co-anchor Neha, student teacher of B.Ed Special Education, welcomes Principal Ma'am, guest of the day, faculty members, and all the participants on the first day of 3 days webinar series on the occasion of Rashtriya Poshan Maah 2022, organized by NSS Cell of Army Institute of Education, Greater Noida. The Poshan Abhiyan was launched in March 2018 by the Prime Minister as the Indian government flagship program to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers, aiming for holistic nutrition. Women are special, so as their nutritional needs, and they need to be addressed from the womb to the golden years. Healthy and nutritionally educated women mean healthier homes and families. Today, to enlighten us more about Mahila and Swasthya, Madam Priyanka Bhardwaj is here with us today. She is a lifestyle management counselor and dietitian. She has been working in the health field for more than 8 years. She has expertise in weight loss, PCOS, and thyroid. Mom has more than 100 success stories. Ma'am is active on social media platforms for creating awareness on nutrition and have more than 40K followers on Instagram. Recently, ma'am has went as a jury on 18 for fashion show and she is getting an award for Power New Age Nutritionist. Now, I would like to invite a very passionate and motivating educator who believes into making each day fruitful and full of new experiences for learners, Dr. Abhilasha Gautam, Principal, Army Institute of Education. I request Ma'am to please welcome the speaker of the day. Ma'am, over to you. Thank you, Neha and Raksha, for such a lovely welcome to me first. Thank you so much. Well, today's topic on Poshan and Mahila. Uh, our very beloved Miss Priyanka Bhardwaj is with us. She is an educationist, she is a nutritionist, and she is creating a lot of examples to be fit and to be fine while doing all the household chores to a female. How a female can make a balance in a work life situation, Miss Priyanka Bhardwaj is the perfect example of that. So I'm very pleased to welcome Priyanka ma'am on this platform today. And when we were talking about that how to go about this program, so the first name that struck my mind was yours, Priyanka, Thank you because so much. I can see your all blogs, all your videos, all your tips of being fit. That how a female can be fit, what kind of diet should she take, and it is very important for a female as she has a lot of duties to perform. The life of a female is not as easygoing as it seems to be, although she is blessed with a lot of roles that she always enjoys and she always feel gratitude for, because a female is actually a very special, especially gifted by God. So along with all the responsibilities and the blessings on us, we should take care, all the females should take care of their health, of their fitness. And I hope today's topic and this today's the session will be is going to be very insightful. Happy to see you there on this virtual platform.
And once again, most welcome. Can't wait more to listen. Very good tips for our blooming, budding, and all the females around us to give them a very fit, fine, and very good future in respect of their health. Most Oh, welcome, Priyanka, ma'am. thank you so much. Thanks so much for your lovely, kind, and lovely in the sense I love to hear something so pleasing for me from someone else, and when that is a friend of yours, so that is really amazing, I must say. As you said that girls or women are actually born with a special strength. They have something extra added to their personality, to their strength, to their body, everything. Physically they are strong, mentally they are strong. If you compare yourself with your husband, if I compare with my husband, my brother, my son, so mentally we people are very strong. Actually, that's the fact. If you yourself will relate it to anyone, any male in your family, so you are. And that's one thing which tells you that you need to be strong physically as well. So mentally strong hona is not everything. Physically also you need to be strong. There are so many diseases around these days, PCOS, thyroid. Even the other day, my neighbor was telling me, Didi, what to do about my weight. Now, polycystic ovaries are, this is a new problem which has come to me. Reason being, now she has two babies. She is not getting time to take care of herself. So this is the main problem which we ladies are facing these days. Now, if we talk about like earlier days, our mothers, our dadis, they used to do work at home in the fields, traditional values pe agar hum jaएं. So they used to do all the works. And if you talk about yoga these days, chakki and all that. So these days we are doing the exercises जो हमारी दादी उनके टाइम में करती थी, चक्की चलाना and बहुत सारे ऐसे पुराने काम. So हम लोगों की लाइफ में just we what we do is get up, go to your work, then after a tiring hectic day we come back, no workout, nothing. We think, oh, steps हो गए. We keep on watching our watch. हमारे 20,000 steps हो गए, हमारे 15,000 steps हो गए. I want this to be an interactive session. Can you just raise your hand who keeps on watching the like their steps always? I can just see some of them are there. So no one of you. You don't get even time to watch the steps. That means I think. So No, this is my something. mind keeps on working. 1, 2, 3, 4. So yes. So in a Uh, day, I maximum walk only 1,000 steps. This is a crude fact. हाँ. So what happens is we feel like कि अगर हम steps cover कर रहे हैं, so that means हमारी calories burn हो रही हैं. But calories burning is not the major thing. Calories burn करने से like हमारी physically हमारी health improve नहीं हो रही है. That too आप बैठे बैठे steps आप count कर रहे हैं या you are walking. When we walk like अपने comfort के accordingly. So अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग व्हेन वी फील टायर्ड वी बिकम अ लिटिल लेजी, थोड़ा स्लो हो गए. फिर हमें जब जल्दी है तो वी आर लाइक मूविंग फास्ट. So that is not something we can call that calories are burning. We are doing something for our health. So there are two basic things. First thing is your diet and second thing is your workout. So workout is something which plays a very important role in our lives. So I think around 5 to 6 years ago, I was also like 70 plus. But when I entered into this field of nutrition and all that, then I came to know that no, this is not something good which I'm doing with my body. Okay. So I have made a PPT with some slides so that you can also come to know how much what is your BMI, what is your BMR, how much overweight you are. So Komal, when can you just tell me, because this is a new software for me, from where can I share that slide? Yes, ma'am. Ma'am, you can see at the bottom the screen is Setting. there. Ma'am, besides setting, it's share. I can. Ma'am has left. हाँ जी, ma'am.
हाँ जी। Share is not there. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh. So I'm saying chat is there, but screen share option I cannot see. Ma'am, Priyanka, share all. there is a plus option. One is Share. mute, then stop cam, then settings, and then share. Share option is there with a plus sign on the screen before leave studio just. I think I'm joining with a mobile because I am sitting somewhere where I have just found a corner for me. So on mobile, I cannot see this plus sign. It can be a reason. Can Yes, it be a ma'am. reason for this? Because on mobile, or you need to Okay, give me. we can do one thing. You just send us your presentation. You just mail your presentation to us. Then Komal ma'am, either she or I may share the screen, and then accordingly you can present your. Yes, Yeah, ma'am. I yeah, will yeah. share the screen. You please share your PPT with me. Yeah, Komal, I'm just sharing it with you in a second. Uh, Sorry for the delay. Actually, I was not aware, although I checked it earlier also. I told you, Komal, that from where I can share the screen. Can you just tell me your... Okay, okay, got it, got it. Just a second, please. Right, ma'am. Komal, I have shared it with you. Can you please check once? So the thing is, what I was telling you till the time ma'am shared the screen, the thing is that we need to be very careful about our health, and we always say that precaution is always better than cure. So how you can take precaution? By improving your lifestyle. It's not just that keeping just your healthy diet is enough for you. Not just healthy diet, it is your lifestyle which is going to improve your life, improve your health, improve your family. Because it is always said that if you teach a woman, you are teaching a family. I think you must have heard it. So if one woman, if the main lady of the house is healthy, she is taking care of her health, so you are teaching the same to your whole family. Like when I started working out approximately 6 7 years back, at that time my children were not doing workout at all. But when I started doing it, my I am a mother of three, so my daughters, they started watching, okay, mama is doing this and that. Now they also started doing yoga and all, and now they are perfect, they are trained, and they are like having so much of flexibility that they can turn from here and there anywhere. So this is something that I feel like I'm giving them something in legacy. And legacy is, for me, legacy is not property. For me, legacy is a good health. For me, legacy is when you are inculcating some good habits which is regarding your health and your body to your family and your friends. So this is something which I feel like every woman should be aware of, about their health, about their fitness, and that is a must. Right, Komal ma'am? Right, ma'am. Hmm. So starting with the day, if I talk about like now the PPT is shared, but I cannot see it then clearly. Komal ma'am, I just want to see. Yes, this is the PPT. Right, ma'am. Huh. I've shared the screen. I hope it's visible. Yeah, it's visible. So if we go to the first slide, you can just share the slide. Nothing else I want on the screen. The next one, please. Now, why is the need of what's the need of a good health to live a quality life and stay away from medicines? Now these days you must have heard that kidney problem हो गई, heart diseases हो गई. There are so many patients in the hospitals जिनको cholesterol level बढ़ा हुआ है या heart diseases हैं. अभी आप recently भी देखेंगे कितने एक्टर और एक्ट्रेस को हार्ट प्रॉब्लम्स हुई हैं, डेथ भी हो गई है. So the reason is taking more of protein, taking more of medicines. तो जो जिम में जाते हैं, they are consuming so much of protein, excess of protein just to build their muscles. So उससे होता क्या है?
किडनी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. रीजन बीइंग द प्रोटीन विच दे आर कंज्यूमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे आर नॉट अवेयर दैट द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज वेरी बिग इन साइज. सो उसको फिल्टर करने के लिए किडनी को एक्स्ट्रा प्रेशर झेलना पड़ रहा है. एंड व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर इज पुट ऑन द किडनी, सो डे बाय डे इट्स गेटिंग, आप खुद ही समझिए अगर एक्स्ट्रा प्रेशर किसी चीज पे जा रहा है तो वो कितना वीक हो रही है. So kidney problems हो जाती हैं. Same, you are eating, like if you talk about, the first thing which I tell my client is to stop packet food, to stop tetra juices and all. Reason being, if you talk about packet food में first food which you consume in the morning is these two girls, those the anchor girls. Can you tell me please the first things, first two things जो आप breakfast में consume करते हैं most of the times? Ma'am, it's basically dalia poha. Dalia poha. Oh, that's so healthy. I'm so happy to listen to that. Mostly what happens is either bread or biscuits. Mostly. So whenever I ask anything, ma'am, bread फटाफट से toast ले आते हैं, sandwich ले आते हैं. So most people say sandwich is very healthy, so we consume sandwich in the morning because morning में इतना time नहीं होता है. Even there are many parents in like if I talk to them, they say ma'am sandwich is okay, bread is okay, biscuit तो चाय और biscuit के बिना तो हमारा day start ही नहीं हो सकता. So one thing which I want to tell is, if we talk about bread, brown bread, white bread, any type of bread. So if bread or biscuit or any rusk or fan or any such thing, if you talk about packet food, that is actually very, very unhealthy. Reason being, first thing you all are aware, मैदा होती है. The second thing, when we are making something like पूरी or something at home, या हम घर में कुछ अपने biscuits भी बना रहे हैं, we normally give desi ghee. So here desi ghee is not used for these things, bread, biscuits and all that. They are using dalda. So when dalda they are consuming, so day by day dalda का क्या होता है? Why dalda is used for long run? कि long run में वो चीज खराब नहीं होती है. So वो हमारी जो arteries है उसमें धीरे धीरे करके वो उसमें इकट्ठा होती जाती है and there is hardly, like all of you must be knowing कि हमारी arteries is just like our hair. उसके अंदर भी वो जब डालडा घी का जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो वहां पे इकट्ठा हुए जा रहा है. सो धीरे धीरे करके थोड़े टाइम के बाद हार्ट ब्लॉकेजेस हो जाती हैं. सो दिस इज द मेन रीजन. सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड पैकेट. बाइकार्बोनेट होता है, नॉर्मली हम अपने घर पे यूज करते हैं, इनो यूज कर लेते हैं, बट वहां पे फैक्ट्री वाला बाइकार्बोनेट होता है. सो दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस. सेकेंडली, जो भी हमारे टेट्रा जूसेस होते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, हम होटल जा रहे हैं, रिजॉर्ट जा रहे हैं, सो वी आर सो हैप्पी, हमने हेल्दी लिया, जूस लिया, बट मोस्टली वहां पे टेट्रा पैक वाले जूस होते हैं. एंड नो जूस इज एक्चुअली अ प्योर जूस. वो भी सारा फ्लेवर्ड है, एवरीथिंग इज फ्लेवर्ड. तो आप खुद ही सोचिए, इतने सारे आपको पाइनएप्पल जूसेस इतना चीप प्राइस पे कैसे मिल रहा है. जब आप एक पाइनएप्पल फ्रेश बाय करके लेंगे तो वो कॉस्टली है सीजन में, इनफैक्ट और टेट्रा पैक के जूसेस बहुत सस्ते हैं. So this is the second thing. So first of all, if you want to avoid medicines, you need to come back to traditional and your regional things. Traditional means which my mother, which my dadi used to eat, which they were using, like बासी रोटी भी, स्टेल रोटी अगर आप खाओगे, that is healthier than a bread. Okay, अगर आप घर के काम कर रहे हो, most of the children they think like कि घर के काम we are not made for doing all that. But if you are bending, you are doing some homework with your mother, you are helping her, so that is actually adding to your health. So second thing is that try to do some work at home, कुछ भी आप ले लीजिए. So that is actually that will work like an exercise for you people. Okay. देन उसके बाद हम बात करें रीजनल की, हमें एवोकाडो नहीं खाना. दैट इज अ फैंसी फ्रूट. अरे भाई हम तो एवोकाडो खा रहे हैं, बहुत रिच फ्रूट है, ये है वो है. ईट समथिंग विच इज रीजनल. रीजनल से बात करें तो जो हमारे आसपास में है, विच इज नियर टू अस. ओके, सो दैट इज रीजनल फूड. सो वी नीड टू ऑलवेज टेक केयर दैट जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे रीजन का है. जब हमारे रीजन का कोई है फूड है, कोई भी एनी फूड आइटम, सो वी आर एबल टू डाइजेस्ट इट इजिली. इजिली मेटाबोलाइज होगा. जब इजिली मेटाबोलाइज होगा
So that is not going to change into fat. Okay, second thing. So these basic things which you need to take care is traditional and regional. Now, Neha ma'am, next slide, please. Sorry, Komal ma'am. Now, what is obesity? Now, sometimes you are not even aware of that you are entering into the phase of obesity. Like, जब आपका weight 55 से 56 होता है, you think like, अरे, it's just 1 kg, hardly matters. 56 से 58 होता है, अरे कोई बात नहीं, 50s की लाइन में ही है, we are looking good, face पे अच्छा लग रहा है, this and that, we keep the positive side of that. 60 पे आ गया, अरे नाउ वी फील लाइक कुछ करना पड़ेगा, अब 60 क्रॉस हो रहा है, बट धीरे धीरे करके हम 60 पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन वी कम टू 62, फिर हम 62 पे कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग इज विद द एक्सपीरियंस. मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स डू लाइक दिस कि मैम लास्ट ईयर तक तो 68 था, पता नहीं इस ईयर अचानक से 74 कैसे हो गया. बट दैट इज नॉट अचानक, दैट इज नॉट डन, इट इज नॉट डन सडनली. You yourself are spoiling your body, and with that increased weight you are facing so many problems. आपका कोलेस्ट्रॉल लगा लीजिए, हाइपरटेंशन लगा लीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ रही है, ऑल योर ऑर्गन्स आर वर्किंग एक्स्ट्रा. तो आपको फिट रहने के लिए अपना बीएमआई मेंटेन करना जरूरी है. नाउ अगर हम बीएमआई मेंटेन नहीं करते हैं, वी एंटर इनटू दैट ओबेसिटी क्राइटेरिया. Now we will develop some problems like hypertension, hypothyroidism, PCOS या fatty liver, जो लेडीज को बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. इवन 13-14 ईयर की गर्ल्स भी मेरे पास आती हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ PCOS these days. So because COVID ने एक तो COVID has helped a lot in mobile. They have mobiles with them. बैठे रहते हैं mobiles पे, reels, shorts, this and that, chatting with their friends. So they are hardly concerned about their health. This is the main reason. So, Komal ma'am, next slide, please. Now, all of you, if you have a pen, you can calculate your own BMI. That is going to help you a lot. BMI is your body mass index, which is your kg per your meter square. Okay. So 1 inch is equal to 2.54 centimeters. All of you know that. For example, if I say my weight is 59 kgs and my height is 5'4", so what I will do is I will convert my height into centimeters first. Okay. Then centimeters को meters में convert करना is easy. Komal ma'am, can you do it side by side for your students? If you have a paper and a pen, please. Although I think you must be underweight, towards the side of underweight. So this way, bache, if you also have a piece of paper and a pen, you can also do that. I was thinking that this is going to be something like you must be sitting in the class or you must be sitting with a pen or paper, because this is something I felt like very important these days. Health is something very important these days. Okay, so if my in centimeters my height is 162.56, so meters may divided by 2, so 1.63 approximate, and I need to divide my weight, which is 59 kgs, with the square of the height in meters. Now it has turned to 22.2. Okay. Now, Komalam, have you calculated? You can use calculator for a fast calculation. So what happens is, so there is a range, like below 18, it is underweight. So there are many people, many, if we talk about ladies, there are many ladies who are not taking care of themselves. They are not eating on time. They are skipping their meals. So when they skip their meals, what happens is, उनका underweight होती है. तो underweight में there are many problems. Hypothyroidism की बजाय hyperthyroidism is again a problem. Secondly, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, स्किन इश्यूज, हेयर फॉल, and there are many other issues. Agar if we talk about a teenage girl, so height is a problem. Many times it has been observed कि
their working their brain is not working properly, means they are not frequent in answering, they are very lazy. So you need to balance it, your BMI. Komal ma'am, next slide please. Now, below 18.5, this is underweight. If we consider it between 18.5 till 25, we can say that is normal BMI. So your BMI should be around 18.5 till 25. 1 kg overweight चलता है, that is on the healthier side. But अगर हम बात करें obesity में, like if you can see in the chart, 25 to 30 is overweight. So overweight is okay. If you are overweight, that is perfectly fine, no issues. Because जब आप overweight होते हैं, आपकी body में tendency होती है that you can fight with the diseases better than the normal person. So overweight is perfectly fine. But when we enter into the situation of obese one, so this is the first category, 30 to 31 BMI जब आपका है, that means you are obese level 1. So यहाँ से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती हैं. The first problem is mainly हमारा hypertension होता है because heart need to put in extra effort, okay, to circulate the blood. उसके बाद आपका BP के बाद आपका शुगर आ जाता है. Then all these things are interlinked. अगर आपको हाइपरटेंशन हुई है तो शुगर आपको बहुत टाइम नहीं लगता. इफ यू डोंट क्योर इट, डोंट टेक द मेडिसिन प्रॉपरली, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट, देन डेफिनेटली आपको डायबिटीज तो होनी है. DM2 टाइप इज 100% श्योर. But if you are aware of your health, you are doing workout properly, you are taking care of your diet properly, then you can take care of all these things. Why I am telling you this thing in detail is you must be observing some people around you in your family, might be your a husband or your father or your dadaji suffering with these problems. So these obese plus stress is the main cause of all these things, for which what I do is I do exercise and meditation. Okay. So Komal ma'am, next slide please. Now, ideal body weight. Now, this was the BMI, which I told you that how you can maintain your BMI. But if we talk about ideal body weight, so your ideal body weight is for females, your height in centimeters minus 105. So you can easily convert your height in centimeters. Like if my height 5'4", 5 feet 4 inches, so converting it into centimeters minus 105. So it comes around 64. सो दैट इज माई आइडियल वेट. अगर मैं उससे ज्यादा या कम मेंटेन कर रही हूँ तो आई नीड टू सी कि मैं कितना मेंटेन कर रही हूँ. सम लेडीज फील लाइक कि मेरे को थोड़ा अंडर वेट साइड पे रहना है जस्ट टू लुक ब्यूटिफुल so that we fit in all the clothes. Okay. Some ladies feel like we need to be on the little healthier side. So maintain it like that. For males, it is height in centimeters minus 100. So for me, say it's 162 minus 105. So that is my ideal weight is 57 kgs if I talk about. Right now it's 58. So 1 kgs I am overweight. But yes, I know I am happy with that weight क्योंकि मेरा weight उतना मेरे को suit करता है. So every one of you must be aware of your body weight. आपका perfect weight कितना है जहाँ पे you feel energetic, you feel like you are looking good, your skin is looking good, you are feeling energetic, you are happy. So all these you need to see. Now coming to next slide, this is your BMR. Now BMR is your basal metabolism rate, means हमारी body को in a rest stage how much energy, how much calories are needed to for our body so that all the organs of ours are working properly. So ये हमारा BMR है. Now it is the number of calories you burn as your body performs basic life sustaining functions. Like हम सो रहे हैं तो हमारी सांस भी चल रही है, all our body organs are working, so that is your BMR. ठीक है. Next, कोमल मैम. Now there is a formula, as I can see, like you will not be able to calculate, but this slide is with Komal ma'am. Komal ma'am, I would love if you can share these two things, BMI and BMR, with your students so that they should know what is their BMI and what is their BMR. This is something very important. They should be knowing this.
Okay, so there is a formula for females as well as for males, so that they can calculate their own BMR. What is their BMR? Means उनको कितनी calories चाहिए हैं so that their body can function well. If they are overweight, so उस कैलोरी से उनको कम खाना चाहिए. If they are underweight, तो उस कैलोरी से उनको ज्यादा खाना चाहिए. So their calorie calculation can be done accordingly. How much calories intake they should do accordingly, according to the BMR. So that is going to help all your students. Okay. Yes, ma'am. Next slide, please. Now for males, I have told. Now there are some of the things, your lifestyle. Like for sedentary, it is, I have written in the formula that you need to divide it with the sedentary, then light active, then moderate active. Sedentary is when we are sitting on the chair, we are hardly getting up from the chair, we are hardly going here and there, like a high profile job. Okay, so that is your sedentary life. So that is like you need to use it 1.2. Light active is like we are going for the job, strict boss है, थोड़ा ऊपर नीचे भागना दौड़ना पड़ता है, so that is light active. Moderate active में you are working out for 1 hour at least a day. So for very active, you are working out, your job is like you are on your toes the whole day. Then sportsmen जो gym person होते हैं, workout for in the morning, in the evening, like that. So for that you need to use these particular जो आपको calculations में दिए 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 and 1.9. Okay. हाँ जी मैम, next करिए please comment मैम. Now explaining you your total weight. Now there is a there can be two people. One is looking fatty but the weight is less, and the other one who is not looking fatty at all. He is like a toned body but his weight is less. So your weight has two parts, mainly made up of two things. One is your bones weight, muscle weight, and your which includes your bones, muscles, and water. And second one is your fat weight. Okay, so there are some people who has good muscle mass. The ones who are working nicely, workout अच्छे से कर रहे हैं, gym people, they are doing weight trainings and all that. So they have built in their muscles very nicely. So उनका जो weight होगा, that is going to be their muscle weight, muscle mass जिसको हम बोलते हैं. But if we talk about someone who is just eating, sitting, तो might be उसका weight कम है, but उसका जो fat weight है, that is more than the muscle weight or your water or your bone weight. Okay. Yes, ma'am. Next slide, please. Now, this is a machine. You must have seen it at various places. You just need to stand on this and your whole calculation will come according to your body on VLCC. And there are many other places you can find out this machine. So you need to check timely, at least once a year, you need to check how much is your fat weight, how much is your muscle mass. You should know it. So how much calories you need to burn to be on the particular weight. So this is something which is a must these days. Komal ma'am, is there any other slide? Okay. This is something very important. The precautions which you need to take to avoid obesity or overweight. First thing is drink water at least 5 to 6 liters in summers. If you talk about winters, it can be 4 to 5 liters. Now, the first question which will come to your mind is drink water is okay, but whether it should be a warm water, it should be a cool, like cold water, what type of water we should drink. Do you have this query? Have you ever thought of this? कि बहुत लोग बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, but हमें ठंडा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, and what? I think you must have heard that कि गर्म पानी पीजिए weight कम हो जाएगा. But let me tell you one thing. We should never go for this because there is no logic behind that कि गर्म पानी पीने से weight कम होता है. Reason being, when we are drinking hot water, it is not going directly to our muscles and it is not dissolving the fat which is there in our body. No. The water which we are drinking is directly going to our stomach first. And stomach, you all know, it is known as organ of fire. So जब हम गर्म पानी, पहले ही गर्म चीज है, उसके अंदर we are drinking गर्म पानी and that is going to our stomach. तो गर्म के अंदर गर्म mix करके not even a single calorie is going to burn. So for that reason, what we need to do is we need to drink cold water. Even in winters, lukewarm is okay,
बट नॉट लाइक वार्म वाटर नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का। आरओ का डायरेक्ट आप ले सकते हैं, गर्मियों में फ्रिज का पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटकी का पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट व्हेन यू ड्रिंक वाटर इन योर स्टमक, व्हेन द वाटर इज गोइंग, सो स्टमक के टेम्परेचर के लेवल पे उस वाटर को लाने के लिए सम कैलोरीज आर बर्न। ओके, so for that reason you need to drink cold water. Now, there are so many hormones which are released when you do workout. You must have observed, like I do it personally when I am a little low. Like some days are good, some days are bad. All of you must be facing that. Sometimes I feel like I'm a little on the lower side. So what I do is I play good music and I do workout. Or normally I do it regularly, but most of the times what happens, sometimes I'm stuck somewhere, so I'm not able to do. But then when I am low, I definitely do workout. After workout, there are so many happy hormones which releases, and I feel automatically, I feel very happy from within, and I'm back to my normal routine. So this is something I am going to discuss it in my next slide. Now, eat every 2 or 3 hours. सम क्लाइंट ऑफ माइंड से कि मैम मैं तो पूरे दिन भूखी रहती हूँ, बस 2 रोटी खाती हूँ, एक सुबह एक रात को, फिर भी पता नहीं वेट क्यों बढ़े जा रहा है। दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, यू शुड नॉट डू इट। हमारा मेटाबॉलिज्म के साथ यू आर प्लेइंग विद इट। ईटिंग जस्ट मॉर्निंग में या नाइट में इज नॉट गुड। यू शुड ईट 2 to 3 अर्ली सो दैट आर मेटाबॉलिज्म रेट इज मेंटेन्ड, हमारा जो BMR है वो मेंटेन्ड रहे। Now, again, sleeping is a very important, sleep plays a very important role in our life. So, circadian rhythm is something like, circadian rhythm में क्या होता है? Sunrise के साथ हमें उठना चाहिए, and sunset के साथ we should, like our body organs धीरे धीरे करके we should go towards the sleeping mode. तो मॉर्निंग में उठते ही if possible do workout, बहुत जोश से अपना दिन शुरू कीजिए। हैव गुड ब्रेकफास्ट, देन लंच में, इवनिंग में वर्कआउट आपने मॉर्निंग में कर लिया तो इवनिंग में आप मेडिटेशन कर सकते हैं 10, 15, 20, 30 मिनट्स के लिए, जितना आपको टाइम मिल रहा है, ट्राई टू डू इट। ओके, देन जैसे इवनिंग होती है 7:30 योर किचन शट डाउन, योर माउथ शुड बी शट, एंड देन ट्राई टू बी ऑन बेड। if it is not possible by 7:30, you can like move it to 8:30। अगर आपके घर में रूटीन है 10:30 का, कम टू 9:30, देन 10:30 से आप 10 पे आइए, 10 से आप 9:30 पे आइए। यू कैन डू इट लाइक दैट। देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सी इट रीजनल एंड ट्रेडिशनल। आई टोल्ड यू वन मोर थिंग इज सीजनल। लाइक जो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स आप मार्केट में जाते हैं, आपको सबसे सस्ता, सबसे चीप मिलता है, ट्राई टू पिक दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज उसमें आपको प्रेजर्वेटिव नहीं मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी हेल्दी फॉर यू पीपल। Okay, now you need to eat lot of roughage as of raw fruits and vegetables in the form of salad. Okay, next slide, ma'am. कोमल ma'am. Now water क्यों required है? Because हमारी blood water से बना हुआ है, you all know. Then muscles में हमारा कितनी बार होता है क्रैम्प आ जाते हैं? Reason being क्योंकि हमने कम पानी पिया है. So muscle requires 80% brain work, 80% of our brain works with water only. And whenever there are toxins in our body, toxins always you can remove through either through your sweat or urination. So for that again water is required. अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, आपने बहुत वर्कआउट किया है, बहुत स्वेट आ गया है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, you'll not be well. अगर यूरिनेट नहीं करे तो टॉक्सिन्स will keep regulating in your body itself. So you need to drink water for all these reasons. Komal ma'am, next please. Now workout क्या? I was telling you endorphin, serotonin, dopamine, oxytocin, statin. So इन सब आपके हॉर्मोन्स के स्पेसिफिक अलग अलग यूजेस हैं। आपको अच्छी नींद के लिए, फॉर अ गुड स्लीप, फॉर लोअरिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, नाउ फॉर कामिंग योर मसल्स, गुड स्लीप, एंड देयर आर सो मेनी। सो एंडोर्फिन वर्क्स एज अ पेन किलर इटसेल्फ। अगर आप लो भी हैं तो भी आप वर्कआउट कीजिए, यू विल फील जहां जहां आपको दर्द हो रहा था, धीरे धीरे करके वो सब दर्द खत्म हो गया है। सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। एक दो स्लाइड बची भी हैं तो रहने देते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाई वी नीड अ हेल्दी रूटीन। हेल्दी रूटीन अगर नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एनर्जेटिक। पूरे दिन काम 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 करके इफ वी आर नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर बॉडी, if we are not taking time for our body, no one is going to help us. It's we ourselves
which we can help, we can help our whole family with a good routine. With if we are healthy, our family is healthy. I think you all will agree with me. अगर हम ठीक है तो हमारी फैमिली ठीक है, स्पेशली फॉर लेडीज. और अगर हम ही बीमार हो गए तो यू विल फील कि अगर लेडी ऑफ द हाउस इज नॉट वेल, so the whole family, whole house is down that day. So for that reason, we feel like we, as a lady, I should take care of my health so that I can take care of my family. Now that's from my side. I think कितना भी बोल सकते हैं हेल्थ पे, and there is so much to talk about nutrition and health. So that was a general thing which I wanted to bring into your notice so that you can take care of yourself. Uh, so, Neha and Raksha, please ask the students, whosoever there in the chat, who have joined this session, all the participants, to please put on their queries in the this chat box, and mean that time till the students are getting on with their queries. So it was really a very nice session, and it was really a treat to listen all the facts related to the health. Uh, so, Priyanka ma'am, I just want to know a couple of things. One is there that there are our mothers who have actually done a lot of household chores, and they have done a lot of work. And then they had this issue of their pain in their knees, and then, you know, they have pain in their body, especially in their this backbone, or knees are especially the things. This is a form of And arthritis. Actually, this is a form of arthritis. Mainly what arthritis. happens is, mainly what happens is when ladies become mother, so there is a deficiency of calcium, which they keep on ignoring for their whole life. बच्चा एक बार feed बंद किया, they leave the calcium medicines and all that, even though the doctor tells कि अभी 1 year तक, 2 years तक लीजिए, but although we people are not like working in the sunlight for these days no longer. So what happens is हमारी body में calcium की deficiency हो जाती है, and in a longer run that causes a problem in all the joints areas. So the thing which I will recommend for our like mothers, even for us also, like we are also feeling sometimes के knees में problem हो गई है, ऐसा नहीं है, हो जाता है. After 35 बहुत सारी ladies में problem हो जाती है. लाइक वर्किंग कल्चर ऐसा है, पूरे दिन खड़े खड़े रहना है, या स्टेयर केस ऊपर नीचे हमें करना होता है. सो फॉर दैट द बेस्ट थिंग इज यू शुड यूज रागी आटा इंस्टेड ऑफ योर नॉर्मल फ्लोर. सो रागी इज समथिंग विच हैज, अगर हम बात करें एक ग्लास लाइक 150 ml ऑफ मिल्क, और हम बात करें एक रागी की चपाती की, सो इट हैज 4 times more calcium than your milk. सो नॉर्मली व्हाट वी डू, कैल्शियम की कमी है, दूध पी लो. घुटनों में दर्द है, अच्छा जी जॉइंट्स में पेन है, दूध पी लो. सो इंस्टेड ऑफ दैट मिल्क इवन, so we should consume ragi chapati at least one in afternoon, one at night we can consume. We can make ragi ka halwa. So ragi, there are many forms in which we can consume ragi, many ways. And are these calcium tablets, are these good supplements for the calcium? देखो, what I do is I always say कि हमें टैबलेट्स पे जाना ही नहीं चाहिए. माय वर्क इज कि क्लाइंट्स की टैबलेट्स को मुझे कम कराना है, वेदर इट्स लाइक पीसीओडी की है, या उनका थायराइड है, या इवन बीपी की है, या आपको डायबिटीज की है. सो आई ट्राई टू टेपर इट, धीरे धीरे करके टेपर करो, एंड आई टेल देम कि कुछ भी नहीं आपको करना. सो व्हेन यू कैन गेट समथिंग फ्रॉम योर डाइट, so why to take medicines? So we should keep on trying. First thing is ragi, and in case बहुत ज़्यादा पेन है तो देसी घी यूज करो on your joints and massage it properly. नाइट में सोने से पहले या आफ्टर टेकिंग बाथ you can do that. जिसको भी है घर में, And we can advise and that. iron deficiency is again one big problem among ladies. Among I females, it's just a very देखिए, common problem. हाँ हाँ हाँ, there are two things these days. If we see, इतना hectic schedule हो गया है that we are hardly paying attention to vegetables, fruits. और if we say कि हमें लगता है बस लंच पैक हो गया, फटाफट से कुछ भी मिल गया खाया और वर्कआउट पे वापस चल गए, मतलब इन योर नॉर्मल रूटीन यू आर बैक.
So they are not taking care of their health basically. So agar wo, like winters is the main time when you can have green vegetables, saag, bajre ki roti and all that. अच्छे से खाएं, अच्छे से बढ़िया हेल्दी चीजें हम अगर अपनी लाइफ में इनकलकेट करें कि हमें यही चीजें खानी है, फालतू का बकवास स्टफ, मैदा और पिज्जा बर्गर और ये सब नहीं खाना है, पास्ता एंड ऑल दैट, सो हमें ये डेफिशिएंसी कभी नहीं आएगी. एंड मोर ओवर वाटर इज वन थिंग विच इज प्लेइंग अ बिग रोल. अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो पानी से भी खून बनता है, हम कहते हैं पानी से भी खून बनता है, तो पानी की डेफिशिएंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हम पानी 2 ग्लास पी रहे हैं या 1 लीटर पी रहे हैं, तो उससे भी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है. So moving on to the chat box, Neha and Raksha, please take up the queries from the chat box. Ma'am, the first question is, even after doing exercise and diet, if weight is not reducing, what to do? Just diet and exercise is not enough. You need to have a healthy routine. Healthy routine in the sense waking up on time, sleeping on time, and before sleeping you should not have your mobiles in your hand. लाइक ये जो ब्लू स्क्रीन होती है, ये जो लाइट होती है आपके मोबाइल्स की या लैपटॉप्स की या आपके टैबलेट्स की, दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. अगर नींद आ भी जाती है तो हमारे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं, ग्रेलिन एंड ऑल दैट, जो हमें अ गुड नैप नहीं ले पाते हैं. So we should always try that if we are sleeping on time around 10:30 or maximum 11, as you people are students are there in this group. So what they can do is 10:30 तक वाइंड अप कर लो, 10:30 मोबाइल स्विच ऑफ करो, साइड में रखो, एंड आफ्टर दैट यू स्लीप प्रॉपर्ली, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. वर्कआउट कर रहे हो बट वाटर नहीं पी रहे हो, देन अगेन आई टोल्ड यू, स्वेट से हमारा टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, बट वी आर नॉट ड्रिंकिंग गुड वाटर, लाइक गुड क्वांटिटी 5 to 6 liters एटलीस्ट वी आर नॉट टेकिंग. तो उसमें क्या होगा, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ही घूमते रहेंगे. सो अगर टॉक्सिन्स बॉडी में ही है तो हमारा वेट रिड्यूस नहीं होगा. ओके, वर्कआउट किया आपने, बाहर के पैकेट फूड बंद करने हैं. गुड डाइट से मतलब मेरा पैकेट फूड सब कुछ. पैकेट फूड में ये नहीं है इंस्टेंट टिक्की आ रही है, ये आ रहा है बाहर का बर्गर पिज्जा ये चलता है, नहीं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली वेट लॉस, इट्स नॉट दैट आई डोंट ईट इट. आई ऑलवेज ईट लाइक वंस अ वीक. हमारे घर में पिज्जा पास्ता आता है बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 3, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो वो भी चलता है. बट पूरा वीक अच्छे से हेल्दी फाइबर जरूर लेना होता है बॉडी में. तो आपको रफेज जरूर खानी है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी. तो इंटेस्टाइन्स की गुड हेल्थ के लिए विच वी कॉल गट हेल्थ, if you need to improve your gut health, so you need to consume more of roughage in the form of raw vegetables and fruits in form of salad. So जब आपका रूटीन पूरा improve हो जाएगा, अच्छे से पानी पियोगे, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो भी टाइम से रहे हो, तो डेफिनेटली वेट कम हो जाएगा. कुछ नहीं होता उससे. So, ma'am, our next participant wants to know. People used to usually say that drinking hot water is good for health, for reducing body weight, but you are asking for cold water to drink. So I just gave the answer that stomach is organ of fire. Okay, so अगर हम गरम पानी गरम हमारा ऑर्गन है, फायर ऑर्गन है, और उसके अंदर इफ वी आर यूजिंग अगेन जो भी हम पानी पी रहे हैं बेटा, दैट इज नॉट गोइंग डायरेक्टली इनटू आवर मसल्स, इट इज नॉट गोइंग टू बर्न द फैट इनसाइड आवर मसल. Okay, so the water which we are drinking, that is going directly to the stomach. The stomach may, if we are drinking hot water and it is going directly to organ of fire, so not even a single calorie is burned. So how your weight get reduced is you are drinking cold water and then your fire organ is again using some calories, burning some calories to bring that cold water temperature to its level. तो उसके लेवल पे लाने के लिए उसको कुछ कैलोरीज बर्न करनी है, विच लीड्स टू वेट लॉस. गॉट इट? आई थिंक आई आंसर्ड इट. Yes, ma'am. Ma'am, you said like for extra calcium, like tablets are not good. So, ma'am, is it okay to take different supplements like fenugreek seeds and methi seeds and all? देखो, when we talk about fenugreek seeds and methi seeds and all that, we use it like as a functional food. Functional food in the sense like if there is a diabetic patient, so I always tell them कि
लाइक मेथी सीड मॉर्निंग में आपको 1 स्पून लेना है जो ओवरनाइट सोक्ड है. So that works as a functional food. Functional food means the first food in the morning which you are consuming to treat some disease. So ऐसी चीजों को लेने से कैल्शियम नहीं बढ़ रहा है. You are treating some diseases, some medical issues को. But if you talk about calcium, तो I told you supplements नहीं लीजिए. I have told you about calcium, बाजरा, रागी, बाजरा, दूध भी आप ले सकते हैं. अदरवाइज फर्मेंटेड फूड जितना भी आप ले सकते हैं, बनाना, दही, ये सब. Which works good as a prebiotic and pre and postbiotic, probiotic. Okay, so this is something which is going to help you. मैम एक क्वेश्चन है कि क्या बैलेंस डाइट नॉर्मली आवर लाइफ इज द बिजी से, सो बैलेंस डाइट नॉर्मली वे जो सुबह ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, दैट एक नॉर्मली जो हमारे अराउंडिंग थिंग्स हैं जो हमारी बैलेंस डाइट को प्रॉपरली हम दे रहे हैं. तो एक जनरली जैसे शाम को आता है कि शाम को हम मिल्क लेते हैं, एक गिलास दूध, बट दोपहर में कैसे एक जनरली नॉर्मल डाइट कैसी रहनी चाहिए एक पर्सन के लिए, एक चाइल्ड के लिए, कैसे कैसे एक नॉर्मल बैलेंस डाइट? अच्छा देखिए, नॉर्मल बैलेंस डाइट, आई विल गिव यू अ सिंपल डाइट प्लान. एक छोटा सा डाइट प्लान हम लेते हैं. मॉर्निंग में आप उठे, ठीक है, ड्रिंक वाटर विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर ओवरनाइट जो भी हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होता है, जैसे ही हम वाटर ड्रिंक करते हैं, दैट गोज बैक टू आवर बॉडी इंटेस्टाइन्स के थ्रू एंड वी आर एबल टू लाइक हम फ्रेश बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत हमें टाइम नहीं लगेगा. फर्स्ट थिंग इज दैट विदाउट ब्रशिंग. आफ्टर दैट ब्रश योर टीथ. After that you can have your tea or whatever you want to have. Then have a good breakfast. Breakfast में you can have पोहा, उत्पम, आप इडली, डोसा, नॉर्मल एक पराठा भी आप ले सकते हैं, बट पराठा अगेन दैट टू नॉन स्टिक तवे पे बना होना चाहिए, नॉट ऑफ मोर ऑफ देसी घी. बहुत सारे देसी घी के साथ नहीं, नॉन स्टिक पे 3 to 4 स्पून ऑफ देसी घी इज गुड इनफ. वी नीड इट एक्चुअली. गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए वी नीड गुड फैट टू बी कंज्यूम्ड. उसके लिए हमें 3 से 4 चम्मच देसी घी पूरे दिन में रिक्वायर्ड है. एवरीवन नीड्स दैट. ओके, आप कुछ भी लीजिए, उसके साथ आप दही ले सकते हैं. आपने ब्रेकफास्ट किया, ओके, आफ्टर दैट अराउंड 11-12 के आसपास, 10:30 11, या आपने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट किया है, सो यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन हैव 1 फ्रूट, जो भी आपका सीजनल फ्रूट चल रहा है, या यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ सैलेड. देन आफ्टर 2-3 आवर्स, ये आप कहीं पे भी, दिस इज समथिंग विच यू कैन डू. आप कॉलेज में है, स्कूल में है, कहीं पे भी, आप घर पे हैं, एक फ्रूट लेके जाना में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. देन अगेन योर लंच टाइम में आप अच्छे से सैलेड रखिए. यू कैन हैव योर कुकुम्बर या कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी हैं, यू कैन कट इट इन 1 बॉक्स, उसको रखिए, उसको फिनिश कीजिए. देन आफ्टर दैट यू कैन हैव योर सब्जी एंड रोटी, जो भी आपको खाना है. इवनिंग में अगेन आफ्टर 2-3 आवर्स यू कैन हैव योर ग्रीन टी, यू कैन हैव योर कोकोनट वाटर, यू कैन हैव योर बटर मिल्क, कुछ भी इनमें से आप कंज्यूम कर सकते हैं. देन इट गोज टू 7:30. अगर बीच में आपको भूख लग रही है, सो यू कैन हैव चना, यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ मखाना, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स होममेड. तो आप कुछ भी ऐसा अच्छा हेल्दी रख सकते हैं स्नैक्स की फॉर्म में. या यू कैन हैव योर बनाना चिप्स, बहुत जो सरसों के तेल में फ्राइड हो, नॉट देसी घी, not even your refined oil. So something I told you about regional, तो हमारे रीजन में अगर हम बात करें तो मस्टर्ड ऑयल इज दी बेस्ट. सो मस्टर्ड ऑयल यूज कर लीजिए, उसमें आप बनाना चिप्स बना लीजिए. देन यू कैन कंज्यूम दैट. देन अगेन एट नाइट 7:30 के अराउंड यू कैन हैव योर डिनर. डिनर में आप दाल चावल ले सकते हैं विद 1 स्पून ऑफ द घी, या आप हरी चटनी, पुदीने की चटनी, लेट मी टेल यू, that is one of the best thing for enhancing your immunity. So in that you can have your pudina, mint leaves, you can have coriander leaves, then उसमें कच्ची आंबी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, you can have your tomato, onion. So that is something मेरे घर में हमेशा रेडी रहती है to enhance your immunity. So उससे immunity बहुत अच्छी आपकी बूस्ट होती है. So you can consume that. Pickle also. So अचार आप खाइए, अगेन घर में बना हुआ हो और सरसों के तेल वाला हो. So that is something a balanced diet. घर में आप नॉर्मल आप ये रखिए. थैंक यू मैम. मैम सो मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठते हैं, तो उसमें क्या नॉर्मली नॉर्मल हॉट वाटर लेना चाहिए या फ्रेश? नॉर्मल सर,
इधर रूम टेम्परेचर पे वाटर लीजिए या आप कोल्ड वाटर ले लीजिए, आप नॉर्मल जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वार्म या गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर। ओके, थैंक यू मैम। जी, वेलकम सर। Ma'am, there is a question that if children below 8 years are not drinking milk at all, even we add different flavors in it, then what to give instead of milk? फर्स्ट थिंग इज वी शुड नेवर गिव एड फ्लेवर्स टू द मिल्क। अगर हम इतने बच्चे को 8 इयर्स से बिलो एज का बच्चा है और उसको हम पहले ही फ्लेवर्स देना शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस विच वी आर गिविंग टू देम। So no flavor should be added to the milk. If milk is not like, if I talk about milk, I think there was some net issue. Yes, ma'am. Huh. So the thing is, you should always take care of your. I'm sharing my Insta link. It's Love Your Diet. I've shared it in the chat box. Sorry, I just clicked on the back button and I was out of the session. So it's Love Your Diet. I think I have shared it in the chat box. LUVURDIET. So there are many reels which I have made related to health issues also, and there are so many posts related to that also. So you all can check it once. There are so many myths जिस पे मैंने रील्स बनाई हैं, like we should not eat banana if you want to lose your weight. You can eat banana because banana is one thing which helps you in removing your bloating. So अगर आपको कहीं जाना है नाइट पार्टी में एंड यू फील लाइक कि थोड़ा टमी दिख रही है, ब्लोटिंग दिख रही है गाउन के अंदर, जस्ट ईट वन बनाना एंड यू विल फील लाइक एकदम पेट लाइट हो गया है, योर स्टमक विल बी वेरी लाइट एंड यू विल फील लाइक एकदम फ्लैट स्टमक हो गया। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट येस यू कैन ईट राइस in your weight loss journey, you can eat potato, but that too not fried one, just boiled potato. You can add salt, you can add pink salt, you can add lemon to it, and then you can consume it easily. Ma'am, one of our participants wants to know your points on sugar-sweet poison. Yes. Oh, sorry, I missed this point. Sugar is actually poison, real poison, which we are eating these days. Earlier time when I was a child, let me tell you, the sugar crystal was not as fine as these days. You can see pure white bada bada crystal hai, and we are paying more for that even. कि अरे बड़ी मोटी मोटी चीनी है, ओ बड़े अच्छे क्रिस्टल एकदम वाइट है, so it should be costly, we are paying that. But actually what happens is, शुगर जो आजकल हम क्रिस्टल की फॉर्म में ले रहे हैं, दैट इज ब्लीच एडेड टू द शुगर क्रिस्टल। सो आप सोचिए जो ब्लीच हम नॉर्मल यूज करते हैं फेस पे, वो ब्लीच शुगर क्रिस्टल्स पे, एंड वी आर ईटिंग इट. So that's the main reason we call it like sugar as a poison. So we should never consume sugar crystal. Yes, but in placement of that, we can have jaggery, we can consume khand, we can consume shakkar. So going back to your traditional values, as I told you, traditional, like you people are abhi to bahut chote ho, hamare time mein kya hota tha, you can ask your dadi, you can ask your mummy कि आप लोग क्या खाते थे. So they used to eat shakkar. Shakkar is something जो उसका बनना ही एक अलग तरीके से होता है, मीन्स फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं होता है वो. तो गुड़ भी उसमें से कोलू टाइप में कुछ होता है, उसमें से बनता है. सो दैट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग दीज थिंग्स, जिसमें
आपके फैक्ट्री प्रोडक्ट्स में जितनी मशीन्स में से इतने टेम्परेचर के अंदर से सेम इफ यू टॉक अबाउट रिफाइंड ऑयल, इतने हाई टेम्परेचर के अंदर से वो रिफाइंड ऑयल निकल के आ रहा है, तो पहले ही उसमें इतने टॉक्सिन्स ऐड हो चुके हैं। सो सेम वे शुगर को यू शुड रिप्लेस इट। हर फ्रूट का एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। डेट्स कंज्यूम कर लो, आप किशमिश ले लो, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ें यू कैन रिप्लेस योर शुगर विद दैट। खांड मैंने आपको बता दिया, शक्कर, जैगरी, सो नो नीड ऑफ यूजिंग दोज़ व्हाइट क्रिस्टल शुगर पीसेस, वो तो यूज़ ही नहीं करने चाहिए। एंड अगर किसी को घर में डायबिटीज़ है तो स्टीविया का आप प्लांट लगा लो, डायरेक्टली आप स्टीविया प्लांट से आप लीव्स लेके यू कैन कंज्यूम इट। Ma'am, one of the participants want to know that drinking milk after dinner, like after 2-3 hours, is it good or bad? We were on the point of milk when this network issue raised. Let me tell you one thing. हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए व्हेन आई वाज अ मॉम, मतलब मेरा बच्चा छोटा था, तो मेरा दूध वो डाइजेस्ट कर सकता है। बट आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, हम गाय के दूध पे डालते हैं, कभी गोट के मिल्क पे बच्चे को बोलते हैं। एक्चुअल में जिस भी एनिमल का मिल्क है दैट इज मेड फॉर, और या हम कहें प्रोड्यूस होता है उसी एनिमल के बेबी के लिए। बट हम लोगों को बहुत आदत पड़ गई है दूध लेने की। अर्लियर ओल्डर टाइम्स देयर वाज नो रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क। कैल्शियम हमें केवल मिल्क से ही मिलता था। लाइक दीज डेज वी हैव रागी, वी हैव सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर, वी कैन कंज्यूम दैट। बट पहले जो दूध भी होता था वो भी बहुत प्योर होता था। चलो गाय का आ रहा है, वो उसने हरा खाया है, मतलब जो भी होता है वो हेल्दी खाते थे। आजकल इंजेक्शंस लगा के तो गाय से दूध मिलता है, डेयरी से अगर आप पूछे तो हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं, देन वी गेट द मिल्क। सो मिल्क इज वेरी डेंजरस। अगर आप मिल्क ना लें तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वेगन डाइट। वेगन डाइट में you get the diet just from plants, so in that no dahi, no दूध, no ghee even, and that is a very very healthy diet. तो अगर आपको दूध नहीं पीना तो बहुत अच्छा है, आप पिए ही नहीं। अदरवाइज इफ यू फील लाइक यू नीड टू ड्रिंक मिल्क, हॉट मिल्क लीजिए, अ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक बिफोर स्लीप, जस्ट हाफ और 1 कप। तो अब नाउ डिपेंड्स, आपने अगर डिनर 7:30 किया है, यू वांट टू हैव मिल्क एट 11, यू कैन हैव मिल्क एट 11, बट देन यू नीड टू सी हर बॉडी की वेरिएशन होती है। इफ इट सूट्स माय बॉडी, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इट विल सूट योर बॉडी एज वेल। ओके, सो यू कैन कंज्यूम एज पर योर बॉडी, इट कैन वेरी। Ma'am, that was the last question. Thank you so much, ma'am, for the very insightful session. Oh, Once thank a you so much. feeling gratitude and not expressing it is like wrapping present and not giving it. Now, I would like to invite Ms. Komal Chaudhary, Assistant Professor, Ami Institute of Education, to present a vote of thanks. Ma'am, please take over the platform. Thank you, Neha and Raksha. Thank you so much, ma'am, for sharing your views and knowledge. It's our privilege to hear you, and I hope our all participants have taken so much knowledge from you. Thank you, ma'am. And I would like to thank our respected principal, ma'am, dear faculties, and all the participants for making this webinar successful. Thank you all. Thank you so much, everyone. Thank you so much for listening me so patiently. And thank you, Dr. Abhilasha. I'm so thankful that you invited me on such a lovely platform. And Neha and Raksha, very nicely. You spoke very nicely. Big round of applause for you people also. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you. Bye bye.